Hello friends, good morning. How are you? Thank you for your nice comment in my first video. And your comment is valuable for us. So many also written about the sound of this video. So we are going to rectify those sound also. And thank you, Doctor. Thank you very much, Dr. Smaran sir, giving nice advice to improvise this video. Thank you to all of you. Let's start the first chapter of 11th class, unit and dimension. It's very important chapter. You are going to read throughout the 11th and 12th career. Clear? It's very easy one and very easy way. We are going to discuss that. Let's discuss that unit and dimension. Dimension is the first one. Let's see this dimension. Let's first start this dimension chapter. Important chapter, and one by one we are going to discuss that. Clear? Let me arrange my screen here. 1 minute. Okay, this is what we're going to get. Very good. Now, you see, dimension, before dimension, you see, dimension, before dimension, let's see what are the types of physical quantities. Physical quantities means what? The quantity which involves in physics. You see, in physics, what type of quantities are used here? First is your distance, speed, time, clear, force, work. All these are what? Physical quantities. And total physical quantities are divided into two parts. One is your fundamental physical quantity. Write down. First is what? Fundamental physical quantities. Fundamental physical quantities. Fundamental physical quantities. And number two is a derived physical quantity. Second is what? Derived physical quantities. Derived physical quantities. Let's see what you mean by fundamental physical quantities. Fundamental physical quantities are of 7 types on which entire science kingdom is based. You can say entire physics kingdom is based. So let's discuss about fundamental physical quantities. First is a fundamental physical quantities. Physical quantities. Physical quantities. In all, 7 fundamental physical quantities are there. Write down 7. 7 fundamental physical quantities are there. 7 what? Fundamental physical quantities. The 7 is very important one. You see, 7 days is very important. So 7 fundamental physical quantities are there. Physical quantities are there. What are they? Write down. Easy to write. Their symbol first. We can say name first. Write down the name first. Here, name first and their symbol. Name first and symbol here. Clear? The first name is what? Mass. This is what mass, the quantity of matter present in a body. That is what mass. Mass is what? M. Second is what? Length. Length is what? L, capital L. All must be written in capital L. And third is what? You see, this mass M must be written as capital M. Length should be written as capital L. Time is what? The time is what? Capital T. Fourth is what? Current. Current is what? This current. Current is what? What? Ampere. A, capital A. Next is your number 5. What? Temperature. Temperature is a fundamental physical quantity. Temperature is Kelvin. अरे temperature T नहीं है. इसमें थोड़ा confusion है. What is the confusion? Time is T. Most of the students they have written temperature as T. No, temperature is Kelvin. The unit of temperature is Kelvin. Understood this or not? So that is important. Temperature T नहीं है, Kelvin है. Clear? T is the time. Got the point? Next, number 6 is the mole. You know what is mole? Mole is the, yes, mole is what? Mole is the Avogadro's number. 6.023 into 10 to the power 23. What? Numbers. It's a big number. And it can be represented by 1 mole. Do you know this? 1 mole is a what? 1 mole is a 6.023 into 10 to the power 23. You know this one. Clear?
And 7 is what? Luminous intensity. Luminous intensity. What is this luminous intensity? Luminous intensity is what? Candela, CD. Candela. Candela, have you heard the name? Candela? Candela. Luminous intensity. What is luminous intensity? To measure the brightness of light, this is used. You see, sun is more luminous than your candle. Sun is more luminous than candle. So that is what luminous intensity. So these 7 fundamental physical quantities are there. You see, mass m, length L, time is what? T, current is what? Ampere, temperature is what? Kelvin, mole is mol, written the small letter, not capital letter. Clear? Luminous intensity, small cd. This is what? CD, small cd. Clear? So these are what? The fundamental physical quantity. Except these 7 fundamental physical quantity, rest are derived physical quantity. Derived, for example, if we'll say work, it's a derived physical quantity. If we'll say force, it is a derived physical quantity, because force is not coming under this 7. This 7 is fixed. Understood this or not? This 7 is fixed. All are derived physical quantity. Clear? Now, what do you mean by dimension? The simple language of dimension is what? If we write the power of this fundamental physical quantity, the power of this one, power is known as dimension. To express a given physical quantity, what? We need the help of these 7 fundamental physical quantity. Then the power of this 7 fundamental physical quantity is known as dimension. Clear? For example, how to write the dimension? I will tell you that. Don't by heart this dimension. So don't by heart. No need to require by heart. Understood this or not? अरे by hearting की बिल्कुल जरूरत ही नहीं है ये पे. Easily I will tell you that. You see how to write the dimension. First you have to know the formula. अगर फॉर्मूला पता है तो लिखो, अगर पता है नहीं तो छोड़ दो. फॉर्मूला के बाद you have to write its unit. Unit important है. Unit. MKS, CGS unit, you know, in lower class also you read. MKS, M is what? Meter. K is what? K is a kilogram. S is a second. CGS is what? C stands for centimeter and G is your gram. S is second. ये दो ही पढ़े थे शायद. समझ में है? First is your MKS and CGS. Clear? MK stands for meter. This is what? Kilogram. This is what? Second. समझ में? This C is the centimeter. This is what? Gram. This is what? Second. इतना ही याद रखो, इसमें और जरूरत है नहीं. आई विल टेल यू दैट स्लोली. और एक है एपीएस भी, एक है एसआई भी, एक है. विल डिस्कस लेटर ऑन. होगा कि नहीं? तो यू सी दैट एमकेएस मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एंड सीजीएस सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड. वेरी सिंपल. क्लियर? नाउ फर्स्ट यू हैव टू राइट द फॉर्मूला, then you have to write the unit, then only you can write the dimension. Without unit you cannot write dimension. Very simple thing. First of all you should know the unit, then you can easily write the dimension. For example, you see simultaneously लिखो मेरे साथ साथ. वाह, देखो how to write. This is what? Distance. Distance is what? I have to write the dimension of distance. ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में रखोगे. डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस स्क्वायर ब्रैकेट में रखोगे. डिस्टेंस का यूनिट क्या है? दैट इज मेजर इन मीटर. तो लिखेंगे मीटर. मीटर का पावर कितना है? 1 है. तो मीटर के लिए क्या लिखेंगे? आउट ऑफ दिस 7 मीटर इज रिटन फॉर whom? लेंथ. मीटर इज रिटन फॉर लेंथ. यू सी लेंथ. तो आई कैन राइट हियर मीटर का पावर यहीं पे 1 है, तो मीटर इज रिटन फॉर लेंथ L1. तो डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस इज L1. दिस द डायमेंशन फॉर्मूला. क्लियर? मतलब ये हुआ मास इज 0, लेंथ इज 1, टाइम इज 0, करंट इज 0, और क्या बोलो, एंड केल्विन इज 0, मोल इज 0. गॉट द पॉइंट? कैंडला इज 0. हो गया ना? 7 1 2 3 4 5 6 7 सब 0 है. इतना 0 लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए only you have to write dimension of distance is L1. Do you follow this or not? That means here this is a physical quantity distance. Its unit is meter. Meter is what? The unit of meter is L1. Clear? And L1 is the dimension of distance. बाकी सब तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है. वाह,
Similarly, I can write the dimension of area. Area dimension is what? Unit of area is a meter square. And बोलो क्या है? मीटर के लिए क्या है? Length. That is what? L square. So dimension of area is L square. Similarly, dimension of here what? Volume. Dimension of volume. Volume is what? That is meter cube. So its dimension is what? L cube. समझ में आ रहा है ना? This is what? L cube. Next is your density. Density dimension is what? Density, that is what? Rho. Rho is what? Mass by volume. This is what? Mass by volume. Mass का यूनिट क्या है बोलो? Mass is what? kg और ग्राम जो भी लिख सकते हो, SI MKS SCGS. This is what? Volume is what? Meter cube. That means kg is what? M1. Meter cube is what? बोलो L3, because meter is L not M. अरे मीटर को M लिख देते हैं. मीटर is what? Length का यूनिट है, तो मीटर is what? L cube not M cube. Clear? This is what? M1 L minus 3. This is what? The dimension of density. Clear? Next is your speed. What is speed? Speed का यूनिट क्या बोलो? Speed is what? मीटर पर सेकेंड. क्लियर? मीटर पर सेकेंड. मीटर के लिए लिखेंगे L1, सेकेंड के लिए लिखेंगे T1. दिस इज व्हाट? L1 T minus 1. समझ में आ रहा है? एंड वेलोसिटी. वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी ऑल्सो मीटर पर सेकेंड. मीटर पर सेकेंड मीन्स दिस इज व्हाट? L1 by T1. दिस इज व्हाट? L1 T minus 1. समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या हुआ? If units are same, then dimensions are same. For the same unit, you are going to get same dimension. Is it clear? Clear हो रहा है? Next is your acceleration. Acceleration. What is the unit of acceleration? Acceleration unit is what? Meter per second square. Acceleration unit is meter per second square. So meter is what? L1, second square is what? T square. So we are getting L1 T minus 2. Clear? This is what? Acceleration. Next is your another famous word is there, acceleration due to gravity. What is the unit of acceleration due to gravity? Bolo jaldi. Acceleration due to gravity. Have you heard this name? कभी सुना है? Small g. अभी पता चला. Small g. Acceleration due to gravity means g 9.8 meter per second square. Anybody falling freely, its acceleration is same as what? G. Acceleration due to gravity 9.8 meter per second square. That means here that unit also meter per second square. We are talking about the unit. You see that we are discussing about unit. Unit plays an important role. Meter per second square, that is what? L1 by T square. This is what? L1 T minus 2. Again you see that unit is same, so dimension is same. अभी पता चला क्या डायमेंशन? व्हाट इज डायमेंशन? द पावर ऑफ द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज. फिजिकल क्वांटिटी का कितना पावर है, दैट इज व्हाट डायमेंशन. हुआ? आई एम नॉट गोइंग टू टेल दैट डेफिनेशन ऑफ डायमेंशन, ऑल दीज थिंग्स. लास्टली डिस्कशन करेंगे क्या डेफिनेशन है ये सब. ये डेफिनेशन कुछ याद मत रखो अभी. अभी फिजिक्स को समझने के लिए ट्राई करो. हुआ कि नहीं? डेफिनेशन बिल्कुल बाय हार्ट मत करो. पहले फिजिक्स को समझो अच्छी तरह. हुआ? What is that sentence? What is that word? Every letter, emphasis on that one. कभी भी बाय हार्ट करने के लिए कोशिश भी मत करो. डोंट बाय हार्ट. बाय हार्ट करोगे तो फंसोगे. समझ में आ रहा है कि नहीं? बाय हार्ट करोगे तो फंसोगे. सो डोंट व्हाट? बाय हार्ट दिस. क्लियर? नेक्स्ट इज योर देखो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. अभी क्या करेंगे? हमको दो डायमेंशन का पता चल गया. फर्स्ट इज योर मास इज m1 एंड एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एक्सेलरेशन क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये बहुत काम का चीज है, काफी जगह पे यूज करोगे. मतलब L1 T स्क्वायर, L1 by T स्क्वायर और L1 T minus 2. तो अभी देखो मैं लिख रहा हूँ फोर्स. ये काफी इंपॉर्टेंट है. फोर्स F, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, लोअर क्लास में था. F इक्वल टू क्या फॉर्मूला बोलो? ma. F इक्वल टू ma हो गया. तो इसमें क्या है अभी? m क्या है? मास है. मास का डायमेंशन m1 है. एक्सेलरेशन अभी थोड़ा एक्सपर्टाइज थोड़ा हो गए. मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है कि नहीं? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मीन्स व्हाट? L1 by T स्क्वायर. एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ऐसे यूनिट को दिमाग के अंदर रखो.
यूनिट को दिमाग के अंदर रखो एंड डायमेंशन उसके बाद लिखो, हुआ कि नहीं? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर L1 by T स्क्वायर, वी आर गोइंग टू गेट दिस इज M1 L1 T minus 2। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से देखो। दिस इज व्हाट फोर्स इज व्हाट M into A, दिस इज व्हाट M1 L1 T minus 2। सही हुआ। नेक्स्ट इसी को लेके बहुत सारे मैं निकाल दूंगा, जैसे हुआ प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, प्रेशर का फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो, प्रेशर इज व्हाट फोर्स बाय एरिया, और थ्रस्ट बाय एरिया बोला जाता है, फोर्स और थ्रस्ट। अरे थ्रस्ट एंड फोर्स में क्या डिफरेंस बाद में देखेंगे, पहले एफ बाई ए तो सुनो। तो एफ इज व्हाट, एफ का डायमेंशन क्या है? एफ का डायमेंशन क्या है? एफ डायमेंशन इज व्हाट M1 L1 T minus 2 बाय एरिया इज व्हाट L2। तो कितना हुआ बोलो? M1 L minus 1 T minus 2। ये समझ में आया? T minus 2 हियर, M1 L1 T minus 2। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वो डायमेंशन है, फोर्स बार बार आएगा। तो फोर्स इज M1 L1 T minus 2, तो प्रेशर इज फोर्स बाय एरिया, तो वी आर गेटिंग फोर्स डायमेंशन एंड एरिया इज L2 M1 L minus 1 T minus 2। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, नेक्स्ट इज योर वर्क। व्हाट इज दैट वर्क हियर? यू सी वर्क, वर्क का फॉर्मूला हमको पता है, लोअर क्लास में पढ़े थे वर्क का। वर्क इज व्हाट F इंटू डी, फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स का अभी अभी डायमेंशन बताया, क्या क्या फोर्स का डायमेंशन बोलो जरा। फोर्स याद रखो, हाँ फोर्स याद करो थोड़ा, क्या है? M1 L1 T minus 2, हुआ कि नहीं? फोर्स इज व्हाट M1 L1 T minus 2, डिस्टेंस इज व्हाट, डिस्टेंस इज L1। तो ये हो गया, दिस इज व्हाट M1 L1 L2, M1 L2 T minus 2, M1 L2 T minus 2, M1 L2 T minus 2। हो गया ना? वर्क भी थोड़ा देखो, इसको भी सीरियसली, ये भी बहुत जगह पे आएगा। फोर्स एंड वर्क दोनों बहुत जगह पे आएगा। फोर्स है M1 L1 T minus 2, इसमें L1 मल्टीप्लाई कर लो तो वर्क आ जाएगा M1 L2 T minus 2, है कि नहीं? नाउ यू सी दिस, नेक्स्ट इज योर व्हाट पोटेंशियल एनर्जी। एक एक करके निकालते हैं, इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट इज दैट पोटेंशियल एनर्जी? फॉर्मूला क्या, थोड़ा रिकॉल करो। पोटेंशियल एनर्जी बोलो जल्दी। पोटेंशियल एनर्जी इज व्हाट? यस, mgh। m stands for mass, mass का है m1। g acceleration due to gravity, already I told that acceleration due to gravity, meter per second square, meter per second square, per means division। हाइट किसमें मेजरमेंट करते हो? हाइट मीटर में मेजरमेंट करते हो, मतलब लेंथ का यूनिट है, तो हाइट इज इन मीटर, सो L1 लिखेंगे। दिस इज व्हाट M1 L2 T minus 2। तो क्या देख रहे हो? पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन जो है, वर्क का डायमेंशन भी वही है, M1 L2 T minus 2। तो लेट्स सी अबाउट काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज दैट काइनेटिक एनर्जी? बोलो काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला बोलो जरा। व्हाट इज दैट काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला? यस, काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। हाफ का तो कोई डायमेंशन नहीं है, जब कांस्टेंट होता है उसको काट लो, कोई काम का चीज नहीं है डायमेंशन में, तो ये हमेशा डायमेंशन लेस होता है कांस्टेंट। mv स्क्वायर, m इज व्हाट m1, velocity is what L1 by T1 and its square, you see its square। if you solve this, m1 L2 by T2, and this is what here m1 L2 T minus 2, m1 L2 T minus 2, T minus 2। मतलब क्या हुआ? The dimension of kinetic energy is same as potential energy is same as work, तीनों का सेम हो गया। तो ये कंक्लूजन हमको मिल रहा है, वॉट एवर मे बी द वॉट एनर्जी, चाहे काइनेटिक हो या पोटेंशियल हो, जो भी एनर्जी हो, ये वर्क के साथ सेम है डायमेंशन। समझ में आ रहा है कि नहीं? व्हाट काइंड ऑफ, वॉट एवर मे बी द काइंड ऑफ एनर्जी, द डायमेंशन इज सेम एज ऑलवेज वर्क। तो अभी लिखेंगे इसका एक नोट करके। तो नोट इज व्हाट, वेरी इंपॉर्टेंट नोट, ये नोट काफी इंपॉर्टेंट है। यू सी दिस नोट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डायमेंशन ऑफ वर्क, dimension of work is same as any kind of energy, any kind of energy dimension, and heat is in the form of energy। अरे heat जानते हो ना, heat is in the form of energy ना, heat q same, and we are going to get here
m1 L2 T minus 2. Heat is also in the form of energy. तो m1 L2 T minus 2. सभी का डायमेंशन सेम है. वर्क इज सेम एज एनर्जी एंड दैट इज हीट, दैट इज m1 L2 T minus 2. समझ में आ रहा है? तो इसमें बेसिक चीज क्या बोलो, दो डायमेंशन ऐसे ऑटोमेटिक याद हो जाएगा. एक है फोर्स का, फोर्स का बोलो क्या है, F इक्वल टू m1 L1 T minus 2. वर्क का क्या है, m1 L2 T minus 2. ये दोनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे. वाह. उसके बाद है कुछ कुछ आएगा, बहुत सारे. विल डिस्कस वन बाय वन, स्लोली विल डिस्कस. क्लियर? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो चार्ज का क्या है, चार्ज, charge is q is equal what formula, it, current into time. current क्या है, ampere. time क्या है, t1. तो this is what a1 t1. समझ में आ रहा है कि नहीं? और you can write this one as t1 a1. got the point? अरे समझ में आया? हेलो. that is what charge is what it, I is what a1 t1, current is what a1 t1. तो t1 a1 हो रहा है. what next is your what, next I can say electric field. ये सब हार्ड लग रहा है, जस्ट आई विल गिव द फॉर्मूला. इसको याद मत रखो, मैं फॉर्मूला दे रहा हूँ, ये 12 क्लास में पढ़ोगे. सो अभी से इसको बाय हार्ट मत करो, मैं फॉर्मूला दे रहा हूँ. तो यू जस्ट राइट ऑन द डायमेंशन ओनली. E इज इक्वल क्या, F बाई क्यू. F बाई क्यू, F का डायमेंशन क्या है, दिस इज व्हाट m1 L1 T minus 2 एंड Q क्या है बताया था, Q इज इक्वल IT ना. Q इज इक्वल IT A1 T1. दिस इज व्हाट A1 T1. सो डायमेंशन क्या हो गया, m1 L1 T minus 3 A minus 1. दिस इज व्हाट द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ही है, इसलिए यहीं से डायमेंशन आएगा. इलेक्ट्रिक फील्ड 12 क्लास में पढ़ोगे, और डोंट वरी, इसके बारे में कुछ भी सोचो मत, पहले फॉर्मूला को देखो. होगा कि नहीं? बाय हार्ट अगर नहीं हो रहा है तो बाय हार्ट मत करो, अगर याद हो रहा है तो रखो, नहीं तो भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है. वाह. नेक्स्ट इज योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, लोअर क्लास में पढ़े थे. पोटेंशियल V इज इक्वल W बाई क्यू. W by Q. W is the work, Q is the charge. W क्या है यहाँ पे, m1 L2 T minus 2, Q is equal 80 A1 T1. So this is what m1 L2 T minus 3 A minus 1. This is what the dimension of electric potential. बहुत सारे हैं, अगर डिस्कशन करेंगे तो काफी व्हाट चलेगा, वैसे 2 साल तक चलता रहेगा डायमेंशन, हुआ कि नहीं? बट इंडिविजुअल चैप्टर में ये सब डायमेंशन फिर पढ़ोगे, इसलिए ये जो फिजिकल क्वांटिटी का जो क्या है, ये ये इंडिविजुअल चैप्टर में तुमको पता चलेगा. बट आई एम जस्ट गिविंग द फॉर्मूला, यू हैव टू राइट द डायमेंशन. समझ में आया हाउ टू राइट द डायमेंशन, व्हाट इज डायमेंशन? तो पावर ऑफ दिस फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज डायमेंशन. वाह. इसका नेक्स्ट पार्ट है, ये था हाउ टू राइट द डायमेंशन. इफ यू नो द फॉर्मूला इजिली यू कैन राइट द डायमेंशन. बट नेक्स्ट पार्ट इसका क्या है, डायमेंशन में फॉर्मूला बेस्ड डायमेंशन. in next video we shall discuss that, we'll discuss that the formula based dimension means I will give the formula and you have to derive the dimension of a constant. clear? slowly देखेंगे, one by one we'll read. clear? आज का ये जो है how to write the dimension, I told that. clear? डायमेंशन को कैसे लिखोगे, हर एक पार्ट का ये वैसे लिखोगे, होगा कि नहीं? और बहुत सारे हैं, जैसे जैसे डायमेंशन आगे जाएगा पता चलेगा क्या है. एट टाइम पढ़ो मत, होगा कि नहीं? तो इतना ही देखो, इसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, हुआ कि नहीं? इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू दैट व्हाट फॉर्मूला बेस्ड डायमेंशन. उसके बाद डायमेंशन एनालिसिस होगा, वाह वो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. ये सिंपल पार्ट है, दिस इज फ्रॉम जीरो लेवल, हुआ कि नहीं? ऐसे आगे बढ़ोगे, उसके बाद फॉर्मूला बेस्ड डायमेंशन करेंगे, थोड़ा हाई, उसके बाद जाएंगे डायमेंशन एनालिसिस को. समझ में आ रहा है? वाह. तो इसको फिर से देखो क्या है, वह बुक अभी मत पढ़ो. आई एम टेलिंग दैट डोंट रीड एनी बुक, जस्ट गो थ्रू व्हाट आई एम जस्ट टेलिंग हियर. उसके बाद मैं बताऊंगा बुक को कैसे पढ़ोगे, एनसीईआरटी को कैसे पढ़ोगे, एंड एचसी वर्मा को कैसे पढ़ोगे, हुआ कि नहीं? एंड हायर ऑथर जैसे जीआरपी हुआ या डीसी पांडे हुआ, कैसे पढ़ोगे. आई विल टेल यू दैट स्लोली हाउ टू रीड. हुआ. सो दिस इज अबाउट माय
first chapter and the first video. In next chapter we'll discuss that what formula based dimension in next part. Okay, thank you to all of you. Take care and read nicely. Read nicely and use your valuable time by reading. वाह मस्ती तो करो, छुट्टी है, होगा कि नहीं, but simultaneously read nicely. Clear? Okay, thank you to all of you. And if any problem, give in the give what write down in the comment box so that we can improvise it again. Clear? Okay, thank you to all of you again. Okay, stop here.